25 people. So welcome to the webinar. We have to continue our journey of our learnings, what's happening in the market. So obviously everybody is quite depressed. Market has been quite bad in the last few days. But two, three things, I don't know if you have experience. Because I'm in the stock market since 25 years. And what I've observed is that वॉर में जब भी बाजार गिरता है वापस से मार्केट का बाउंस बैक बहुत फास्ट होता है. प्लीज रिमेंबर दैट. सो आई वांट टू फर्स्ट देयर आर टू थ्री क्वेश्चंस पीपल हैव. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द मार्केट विल गो डाउन फर्दर. द सेकंड क्वेश्चन इज वॉर का क्या सिचुएशन है. व्हाट इज माय टेक ऑन द वॉर. कि वॉर क्या लग रहा है अभी. मार्केट war अभी कंटिन्यू करेगा. Can it become very dangerous? So these are few questions people are asking me. So I want to give my take. I may be wrong because I'm not a war expert. But जो मैं market में देख रहा हूँ, so I see two markets mainly. One is definitely the US market and crude oil. So let's see the chart of crude oil and understand कि market में अभी panic है नहीं है, because everything is related to crude oil. तो मार्केट को अगर समझना है कि वॉर का डेंजर कितना है, सो दो इंडेक्स को स्टडी करते रहेंगे तो आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया लग जाएगा कि व्हेन विल बी द टर्न अराउंड. और उस दिन अगर आप पैसा लगा पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. तो लेट मी गिव यू सम आंसर. प्लीज ओपन द चार्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्लीज. Partho can help you. क्रूड ऑयल फ्यूचर है ये. Current data, please. Can I see the current Sir, chart? shall I show it through trading view or No, please. It's fine. It's fine. Crude oil. it's fine? Okay. Current date, please. Daily chart. So अगर आप देखिए क्या हुआ वॉर से क्रूड ऑयल का दाम बहुत जोर बढ़ा. इफ यू सी द डेट, किस दिन डेट बढ़ा. गो टू द डेट प्लीज. फर्स्ट डेट जिस दिन बढ़ा, उसके एक दिन बाद सेकेंड डे जिस दिन रेड टिक है. थैंक यू वेरी मच. रेड टिक प्लीज. रेड टिक प्लीज. यस. सो देखिए यहां से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने लगा. ओके. देन बिकॉज ऑफ द वॉर इट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इट वेंट डाउन टू $116 ऊपर में. एंड राइट नाउ इट इज होवरिंग. अगर आप देखेंगे last 5 days, can you say how many days are there now? 5 days. It has become very stable. 1 2 3 4 6 days. ऊपर का हाई है अप्रोक्सीमेटली $100 एंड नीचे का लो है, द लो इज $91. सो आप मार्केट में सी, if you know sometimes people say everything is in the price. So if जिस ही दिन ये $91 नीचे तोड़ दिया, मतलब इस चार्ट में मार्केट में बहुत बड़ा तेजी आ जाएगा. मैं आपको भी बताता हूँ. और अगर कोई बड़ा चार्ट नीचे आ गया सो ध्यान रखिएगा. एंड इफ देर इज अ डेंजर, दिस विल, इफ यू वांट टू सी फर्दर डेंजर आएगा कि नहीं मार्केट में, क्योंकि लास्ट 6 डेज में मैं देख रहा हूं क्रूड ऑयल इज स्टेबलाइज नाउ इन अबाउट $9. दिस शोज प्राइस देखिए 6 दिन से अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, दैट मीन थिंग्स हैव स्टेबलाइज्ड. थिंग्स हैव स्टेबलाइज्ड सीइंग द क्रूड ऑयल प्राइसेस. बिकॉज अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो ये ऊपर जाती रहती. Okay, so I think so. The issue is $100 and $91. If you will keep seeing this chart, this is investing.com. It's a free website. इसमें आपको भाव मिल जाएंगे क्रूड ऑयल का.
So if you want to know whether the market will be further risk, not risk, or market कब turnaround होगा, it's quite stable in 6 days, you know. So this is the first proof that market is stabilizing now. The risk is going down, according to the prices. See, please understand there are very intelligent player in the market. If the risk was very high, these prices would have gone up. But now has the risk finished also? I can't say because it is not broken 91. If it breaks 91 and goes downward, that means the risk is now reducing drastically. So this is one chart you have to study to exactly know the war situation in the market. Okay? क्योंकि आपको बहुत सारे न्यूज आप पढ़ेंगे, टीवी पढ़ेंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. बट ये आपको सबसे पहले दिखा देगा कि मार्केट में डेंजर है कि नहीं है. This will give you a very good idea whether the market has danger or no danger. Okay, so just follow the crude oil prices. It's very simple. I can again show you. Please show them so that how to go to crude oil futures. Sujit, please show them, please. Sir, what should I show? Show them how to go to crude oil prices. Go to investing.com again. Select crude oil. Show them, please. Sir, I have already shared my screen. I know. Please show them again. Restart. Okay. Show them. Go to the front page. Go to the front page first. Okay, please store from here. Yes. Investing.com में जाइए. It's a free website. आपको ऐसा पेज मिलेगा. ऊपर में if you just put crude oil prices. तुम सीधा चार्ट में आ गया एक्चुअली. Yes. So if you will select crude oil price can you show from the front page, please? They don't know now. Please, can you show them from the front page? Okay, Don't sir. know. Okay. 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 Show them like a baby, na? ये पहला पेज खुला, फिर ऊपर में क्रूड ऑयल सिलेक्ट करिए. देखिए यहाँ पर ही, देखिए क्लिक किया यहाँ पर, ये चार्ट खुल जाएगा आपका. फिर ऊपर में यू कैन सिलेक्ट सर्च में यहाँ पर crude oil prices. This is one way. Just select crude oil futures and see it every day. Put daily. तो आपको दिख जाएगा crude oil price. तो क्या हो रहा है? Okay, so rather than seeing the TV and all getting very stressed down, just go and see crude oil prices. If it goes above 100, the risk is increasing. If it goes below 91, the war is getting over. 6 days में आपको ये क्लियर कर सकता हूं. 6 days में ये जो प्राइसेस है, नाउ इट इज शोइंग इट इज स्टेबलाइजिंग. रिस्क कम नहीं हुआ है, बट रिस्क बढ़ भी नहीं रहा है. भाव में बहुत चीज दिखाता है. बिकॉज मेनी पीपल आस्क मी, क्या हो रहा है मार्केट में. क्योंकि क्या हो रहा है कि व्हेन यू विल सी टीवी ना, वो आपको इतना डरा देगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मार्केट. तो जस्ट वॉच द क्रूड ऑयल प्राइसेस टू नो राइट नाउ whether the war is over or whether the risk is increasing. If you like this very simple thing, if I can have a thumbs up because you can't chat or anything, do you think it's a very good simple thing? आपको थोड़ा शांति मिलेगा. You can put a thumbs up if you like this very simple strategy. We have 98 people right now. सिर्फ क्रूड ऑयल प्राइस देखिए, आपको और कुछ टीवी देखने का दरकार नहीं. मैंने दिखा दिया. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. investing.com फ्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए. क्रूड ऑयल लगा लीजिए, सिर्फ देखते रहिए. CFD का प्राइस देखिएगा, वेरी सिंपल. 91 के नीचे गया, वॉर इज एंडिंग, रिस्क इज रिड्यूसिंग. 100 के ऊपर गया, रिस्क इज इंक्रीजिंग. ओके, सो दिस विल हेल्प यू टू बी मोर स्टेबल. क्या है ना, क्योंकि आप लोग बहुत देखिए क्या होता है व्हेन इतना सारा माहौल खराब हो जाता है ना, वी गेट वेरी स्कैर्ड. ओके, दैट इज द नंबर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ लेट्स कम टू द निफ्टी चार्ट. लेट्स सी द निफ्टी चार्ट. 6 दिन से ये स्टेबल है. नाउ लेट्स सी द निफ्टी चार्ट, निफ्टी डेली चार्ट.
सो दैट रादर देन फोकसिंग, अगर आप देखिए निफ्टी में भी अब नीचे का घर बंद हो गया, आपने शायद देखा नहीं है, नीचे का भी जो लाइन है 6 दिन से अगर आप देखेंगे मार्केट जो है ना, नीचे का लेवल जो है, नीचे का लेवल क्रिएट कर गया। प्लीज पुट अ डाउनवर्ड साइकिल। 22,900 में मार्केट जो है वो स्टेबल है। ओके, मार्केट अब ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, बट अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में 3 दिन से बाइंग आया था, लेकिन फिर एक बड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन मार्केट नया लो नहीं बनाया। अब मार्केट नीचे जाएगा 22,900 के नीचे, तो रिस्क बढ़ रहा है बाजार। ओके, 22,900। तो आप दो चीज देख सकते हैं, निफ्टी का भाव 22,900 तोड़ रहा है, एंड क्रूड ऑयल 100 ऊपर डॉलर के ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स द रिस्क इज अगेन इंक्रीज्ड इन द मार्केट। नाउ द वॉर इज गेटिंग वर्स। ओके, नाउ $91 के नीचे क्रूड जा रहा है, एंड ऊपर का लेवल लगा दीजिए, ऊपर का ये लेवल बेटा 3 दिन पहले जो हाई है, गो डाउन प्लीज, 3 दिन पहले, थैंक यू, नॉट दिस वन, द ग्रीन टिक, यस, 23,800 के मार्केट के ऊपर चला गया। मार्केट इज सुपर बुलिश। उस समय आप निफ्टी देखे 23,800 के ऊपर चला गया है, एंड क्रूड ऑयल $91 के नीचे आ गया है। दैट मीन मोर और लेस द वॉर इज ओवर, द रिस्क इज रिड्यूस्ड। और ये जब ही होगा जब ये हॉर्मोन्स खुल जाएगा। ओके, तो रादर देन सीइंग द टीवी एंड गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, जस्ट सी दीज टू चार्ट्स एंड सी एंड डिसाइड कि रिस्क वॉर खत्म हो रहा है कि वॉर अब रिस्क बढ़ रहा है। Okay, so don't follow anything else. We have 103 people. Just follow these two charts. And yeah, मैं आपको एक और चार्ट दिखा सकता हूं, S&P 500, which is the US chart. US chart please, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। There is the biggest index in the world is US S&P 500. Okay, US 500 करेंगे। अब 6 दिन का जो चार्ट है इसमें, अब देखिए अगर ये मार्केट ऊपर का टिक बना देना ऊपर में, ओके, 6754 के ऊपर अगर बाजार चला गया, 6754 यूएस मार्केट, द रिस्क इज फिनिश्ड इन द मार्केट। ये 6 दिन में जो हो रहा है, मैं 6 दिन लास्ट 6 डेज के बारे में बता रहा हूं। सीइंग क्रूड ऑयल, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट, एंड निफ्टी मार्केट, बिकॉज एवरीबडी इज आस्किंग मी मार्केट क्या होगा, मार्केट क्या होगा, क्या लग रहा है। तो फर्स्ट में आपको बता दिया कि हाउ विल यू सी, अगर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, $91 के नीचे क्रूड गया, 675 के ऊपर S&P चला गया, 23,800 के ऊपर निफ्टी चला गया, जरूर से मार्केट में पैसा लगा दीजिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, डेफिनेटली पुट मनी इन द मार्केट, है तो आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। दैट मीन्स द रिस्क इज फिनिश्ड, कहीं ना कहीं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। ओके, तो वो आपका टाइमिंग जो है बहुत एक्यूरेट हो जाएगा, मार्केट, द टाइमिंग विल बी वेरी एक्यूरेट। ऐसे भी जिस दिन वो होगा तो उस दिन एक बार 1,000 पॉइंट ऊपर ही गैप अप खुलेगा मार्केट। The market will open at least 1,000 rupees gap points gap up where if this happens. Okay, so this is my take in the market. Now my personal understanding, जिस हिसाब से 6 दिन से मार्केट स्टेबल है और मार्केट नया नया लो नहीं बना रहा है इंडिया में भी, और क्रूड ऑयल भी मैं देख रहा हूँ $100 में अटक गया है, आई थिंक सो मोर और लेस if you see history, same thing had happened on 24th February 2024. ओके, 22, सॉरी, जिस दिन रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, वही 3 दिन 4 दिन महीना बाजार डाउन था, फ्रॉम मार्च टू जून, 2-3 महीना बाजार डाउन था, और फिर मार्केट बहुत तेज हो गया था। इसीलिए हम लोग ने अपने कॉल में अभी सेल कॉल नहीं दिया है, बिकॉज क्या है, अभी पूरा न्यूज बेस्ड मार्केट है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया, क्रूड ऑयल नीचे गया, आप देखेंगे मार्केट धार 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 बढ़ने लग जाएगा, 1,000-2,000 पॉइंट। Okay, 1,000 to 2,000 point market will go up. So that is going to change everything. That is going to change everything in the perspective कि फिर हम लोग अरे बाजार कैसे तेज कैसे हो गया, so it is absolutely news based.
अकॉर्डिंग टू मी, जो चार्ट्स में देख रहा हूं और जो मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है प्राइसेस देख के, मेरे को लगता है नाउ द थिंग्स हैव स्टेबलाइज्ड, थिंग्स हैव स्टेबलाइज्ड। फर्दर डाउनसाइड रिस्क हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट गॉड, डेफिनेटली हो सकता है, बट मेरे को लग रहा है अब ये मार्केट अब स्टेबलाइज हो रहा है 6 दिन से, जो मुझे समझ में आ रहा है। द मार्केट इज इन टू अ स्टेबलाइजिंग मोड। This is what I can see from the charts. Crude oil, S&P and India, I can see now the market is getting stabilized. This is what is my call. Okay. So ये एक अभी एक और एक और मैं देखा हूं ना, सेकेंड टाइम जो बॉटम बनाता है, गो टू द निफ्टी चार्ट, गो टू द निफ्टी करंट चार्ट प्लीज। ये जो 3 दिन से मैं देखा नीचे से जो बाइंग आया, और आज भी मैं देख रहा था, देयर वर सर्टेन स्टॉक्स which was doing very very well, you know so I was very surprised that मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में बहुत अच्छी बाइंग आ रही है नीचे में, तो मार्केट इतना लो पे है ना, अच्छे अच्छे स्टॉक 15 20 25% अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली अभी मैं बोलूंगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा, बट मेरे जितने कस्टमर्स हैं जो बहुत साल से मार्केट में हैं, दे आर ऑल इन्वेस्टिंग राइट नाउ, बिकॉज दे वांट कि अब बाजार ठीक है गिरेगा 1000 पॉइंट और नीचे इन्वेस्ट करेंगे। बट इफ यू बाय गुड स्टॉक्स एट दिस रेट, बहुत अच्छे स्टॉक 15 20 करेक्शन में मिलते नहीं। सो यू कैन बी चूजी एंड यू कैन बाय सम गुड स्टॉक्स, जो अच्छे स्टॉक 20 25% गिरे हुए हैं, आई ऑल्सो टेल यू, उसमें आप कुछ स्टॉक्स ले सकते हैं नीचे में। इट लुक्स वेरी वेरी हैंडसम टू बाय सम स्टॉक्स एट अ लो लेवल। ओके, सो दैट्स अ, बट दैट्स अ कॉल विच वेरी फ्यू कैन डू। मैंने देखा है maybe out of 100 only 2 or 5 3 people can do that. 97 don't have the courage to put money in this market, because इतना डर बैठ गया है, nobody has the courage to put money. But people who are there in the long run, who have seen many wars, they don't care. They said ये शेयर से क्या फर्क पड़ता है, वॉर होगा तो ये शेयर जो है, जो अच्छा शेयर है वो अपना अपना सेल और अपना प्रॉफिट करता ही रहेगा। So they understand the company and they invest actually, which, as I said, out of 100 people, only 4 5 can do. But there is a very good time when you have a good knowledge at that ये शेयर बहुत अच्छा रन दिया था, अभी आने सिर्फ 20 25% नीचे मिल रहा है इसे, तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। So that is another point which has to be seen. But last 3 days में जो बाइंग आया था और मार्केट नया लो नहीं बनाया, this is called double bottom technically. So now if the market goes above 855, 23 855, then सीधा the run will be very very strong and high, very very strong and high. और आज भी मैं देख रहा था, there was huge buying in certain stocks, certain portfolios had done very very well, which I was observing, जो आप लोग डेली नहीं देखते हैं, बिकॉज आप लोग सिर्फ मार्केट देखते हैं और मार्केट गिरा हुआ है, अप है, यू सी दैट, बट वी सी द मार्केट की, इफ देयर आर स्टॉक्स, व्हाट आर द गुड स्टॉक्स डूइंग। सो देयर वर गुड बाइंग इन द गुड स्टॉक्स एक्चुअली। So these are my take in the market, because everybody wants कि market क्या लग रहा है. I think so market is stabilizing. That is why we have not put a sell call despite the data of F2 being so heavily minus, because it's a war market. I know that अभी sell call दे देंगे and if people sell और अचानक 1000 1500 पॉइंट तेज खुल जाएगा, they will lose a lot of money. That's why there's no sell call from my side during wars. मैं wars में sell call नहीं देता, because I have seen India Pakistan, अभी जब लास्ट 150 साल पहले 1 2 दिन का कॉल आया था, व्हेन हमास एंड इजराइल में हुआ, फिर रशिया यूक्रेन, मार्केट गिरता है फिर बहुत जोर से बढ़ जाता है। दैट इज द नेचर ऑफ द वॉर मार्केट। ओके, सो दिस इज माय कॉल, एंड आर वी आउट ऑफ द वुड्स टिल क्रूड डज नॉट गो बिलो 91? वी आर नॉट आउट ऑफ रिस्क। ये भी मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर मार्केट में आउट ऑफ रिस्क होता है तो क्रूड ऑयल नीचे चला जाता। तो जैसे ही क्रूड ऑयल 91 के नीचे जाएगा, आपको कहीं ना कहीं हॉर्मोज का न्यूज या कुछ न्यूज आपको विद इन फ्यू आवर्स मिल जाएगा मार्केट। तो क्रूड ऑयल को कहीं ना कहीं अपने ऐप में, फ्री ऐप है ये, डाउनलोड कर लीजिए इन्वेस्टिंग, और क्रूड ऑयल को लगा के रख लीजिए।
क्रूड ऑयल अगर गया तो आपको मालूम है कि नाउ द स्टोरी, द मार्केट इज डन. So please download the app. It's free, investing.com, and hold it in your and see, keep seeing crude oil prices, continuously, rather than seeing the news and getting scared. Because न्यूज में जो, अगर मैं देख रहा था न्यूज में, इतना डर लगेगा अपने को न्यूज देख के कि आपको लगेगा बस कि बाजार सब जीरो ही हो जाएगा. सर बाजार कभी भी जीरो नहीं हुआ है. ट्विन टावर्स में भी 2001 में आई वाज देयर, मार्केट गिरा, 6 दिन यूएस बंद था और फिर बाजार तेज खुला. सो बहुत वॉर्स हुए हैं. इट्स अ टेम्पररी फिनोमिना एंड यू विल सी दैट द मार्केट विल बी अप इन अ वेरी बिग वे. Okay, so this is one very important thing which I wanted to share with everyone कि मेरा take क्या है market का, and are we, but again I'm repeating, are we out of the woods? Below $91 we are out of the problem. Again I repeat, below $91 we are out of the issues. That means the thing is over for us. Okay, so let's continue now. Let's continue with the presentation. I hope this has helped you. Can I get a thumbs up if this has helped you? My thought process, it is easy. आपके लिए भी इजी हो जाएगा rather than watching TV. हम लोग यही देखते हैं, मैं पर्सनली यही देखता रहता हूँ क्रूड ऑयल में. और जैसे $91 जाएगा, वील कैन मे बी विल डू अनदर सेमिनार एंड विल टेल एवरीबडी कि भैया रिस्क एकदम खत्म हो गया है मार्केट में और हम लोग अब डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके, लेट्स कम टू द, थैंक यू एवरीवन, लेट्स कम टू द पीपीटी. तो अभी भी मैंने बाय रखा है. लोग मेरे को एक दो जन पूछे इतना सेलिंग है, बाय क्यों रखें. वॉर में हम लोग इतना जल्दी सेल नहीं देना चाहते. वॉर इज, माय हिस्ट्री हैज सेड, आई थिंक रिमेंबर, अगर आप अभी भी, जब इंडिया पाकिस्तान का भी 22 अप्रैल को वॉर हुआ था, तो मार्केट वही 1000-1500 गिरा और फिर वो जोर से वॉर खत्म हुआ और फिर से मार्केट एकदम मैसिव ऊपर चला गया. तो ये इनफैक्ट इट्स एन अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से. सो आई एम जस्ट कीपिंग इट बाय ओनली फॉर इट. एज पर डेटा इट इज सेल, बट बिकॉज ऑफ द वॉर मैंने अभी तक सेल ट्रेंड दिया नहीं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ये प्लीज कंटिन्यू, प्लीज टू प्रीवियस स्लाइड प्लीज. सो मैं हर बार आपको रिपीट करता हूं दैट वी शुड कंटिन्यू टू फॉलो दिस सेशन वी आर डूइंग एवरी 15 days. सो इस बाजार में भी F2D2 क्या खरीद रहे हैं. लास्ट 15 दिन में 2,000 पॉइंट डाउन है. एंड यू आर, कैन यू इमेजिन, देयर आर स्टॉक्स व्हिच इज प्लस in the last 15 days. In the last 15 days, there are still stocks which I will show you is plus. Because the smart money are buying those stocks. They are buying those sectors. 2,000 पॉइंट निफ्टी गिरा है एंड स्टॉक्स अभी भी प्लस है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस 15-day सेमिनार, जिससे आपको लगेगा इतना बाजार डाउन है और कौन सा स्टॉक ऊपर है. और अभी भी उन लोग पूरा क्या क्या खरीद रहे हैं. इसीलिए लर्निंग दिस एवरी 15 days, फ्रेंड्स, 109 लोग हैं. प्लीज गेट्स योर फ्रेंड एंड फैमिली. इट्स अ फ्री सेमिनार. लेट देम वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि थोड़ा डर कम हो जाएगा. बहुत खराब मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं which I will show you right now. That is why we are doing this webinar every 15 days to know you, tell you that smart money कहां जा रहा है. Okay, let's continue. Okay, we'll do this later. Okay, let's go next slide. Okay, so capital goods sector में उन्होंने बहुत बड़ा बाइंग किया. Okay, so I'll show you the data. Can you show the Excel please? फ्रेंड्स, लास्ट 15 दिन में 4,000 करोड़ का बाइंग किया उन्होंने कैपिटल गुड्स में. 4,000 crore rupees in this market. When the Nifty is down by 2,000 points, they are still buying capital goods. Now this is the data which is given by SEBI every 15 days. ये मेरा, मैंने नहीं बनाया है. SEBI देता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन लास्ट 15 दिन में कौन से सेक्टर्स को खरीद रहे हैं. सो दे आर हेविली बुलिश ऑन कैपिटल गुड्स. हेविली बुलिश ऑन कैपिटल गुड्स, एंड आई विल शो यू इन कैपिटल गुड्स में वो कहां बाइंग कर रहे हैं. पीपीटी प्लीज, पीपीटी प्लीज, पीपीटी.
ओके, तो सबसे पहले दे आर बाइंग इन डिफेंस, ऑब्वियसली वॉर है। तो डिफेंस स्टॉक्स में देखा, डिफेंस म्यूचुअल फंड सबसे कम गिरे लास्ट लास्ट 15 दिन में, वेयर ऑल द म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर डाउन। डिफेंस में सिर्फ 8-10 5-7 ही म्यूचुअल फंड हैं स्कीम्स, एंड दे आर फॉलोइंग द लीस्ट, विच आई कैन शो यू बाय थिंग। और उसमें भी कुछ स्टॉक्स हैं जो प्लस है। सो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कैन यू ओपन द डिफेंस म्यूचुअल the mutual fund data please? And obviously war है तो डिफेंस के फंड्स कम ही गिरेंगे। डेटा प्लीज, नॉट दिस प्लीज, डेटा प्लीज क्लोज दिस, थैंक यू। ओके, ऑपोजिट डिफेंस के जो फंड है, 4 ही फंड है, 4 ही म्यूचुअल फंड स्कीम है पूरे, उसमें सबसे कम डिफेंस फंड्स गिरे हैं। सब गिरे हैं, पूरा माइनस है मार्केट, लेकिन सबसे कम गिरा है इस डिफेंस। सबसे ज्यादा क्या गिरा है? सो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। पीएसयू बैंक्स हैव ऑलरेडी डन वेरी वेल, बट ऑटो हैज फॉलोन द वर्स्ट बिकॉज ऑफ पेट्रोल प्राइसेस। डेफिनेटली पेट्रोल जब इतना ऊपर हो जाता है, ऑटो सेल्स कम हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल स्केयर, you know, auto shares have fallen the most, then PSU banks again because of inflation. बट मेरे हिसाब से जिस दिन $91 के नीचे गया, सबसे पहले पीएसयू बैंक्स ले लीजिएगा, बिकॉज पीएसयू बैंक्स हैव बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स इन द लास्ट 6 months। महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, सब शेयर्स बहुत अच्छे चलेंगे और आपको अच्छा करेक्शन मिल रहा है। ओके, जो क्योंकि इस पैनिक में सबसे ज्यादा यही गिरे हैं। ओके, एंड ऑटो स्टॉक्स भी बहुत गिरे हैं। तो ऑटो स्टॉक में मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा जो अपने ले सकते हैं, बट दिस इज व्हाट इज हैपेंड इन द लास्ट 15 days। बट whatever is fallen the least, opposite please। सो डिफेंस हैज फॉलन द लीस्ट। सो कैपिटल गुड्स जो है वो डिफेंस कैपिटल गुड्स के अंदर आता है। सो दे डोंट गिव डिफेंस वाइज, वो लोग वैसे नहीं देते हैं, दे गिव अ ब्रॉड सेक्टर कैपिटल गुड्स। ओके, सो आई शो यू इन माय वेबसाइट। कैन यू ओपन कैपिटल गुड्स इन आवर वेबसाइट? आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या मैं ये डेटा अवेलेबल रहती है? हाउ टू गो, प्लीज गो स्टेप बाय स्टेप, दैट विल वेरी फास्ट। यू गॉन, go down, then click sector leaders, and then go to capital goods। अगर आप capital goods में जाएंगे, you will see that there are more than 30, how many can you go back please once? There are in capital good, there are 22 subgroups, इसमें डिफेंस आता है, बट सेबी आपको कैपिटल गुड्स के हिसाब से देता है। इफ यू क्लिक हियर, then you have 22 different things। सो अगर इसमें एरोस्पेस डिफेंस में जाएंगे, that is up, go to above, go up, top one please। एरोस्पेस डिफेंस ये सबसे कम गिरा है अगर आप देखेंगे तो। ओके, सो दीज आर द स्टॉक्स ऑफ एरोस्पेस डिफेंस। आई शो यू द डेटा ऑफ एरोस्पेस डिफेंस। लास्ट 15 दिन में कौन से स्टॉक बढ़े हैं। सोलर इंडस्ट्रीज इज प्लस इन दिस मार्केट। इन दिस मार्केट डेटा पैटर्न, बेल, सब ज्यादा गिरे ही नहीं है अगर आप देखेंगे। एमटार क्योंकि बहुत बढ़ गया था, तो एमटार मैंने, हम लोग ने, याद होगा अपने, मेरा 9 फरवरी का वीडियो यूट्यूब में है। हम लोग जितना भी वीडियो करते हैं ना, सब यूट्यूब में हम लोग डाल देते हैं, बाय द वे। आई होप एवरीबॉडी नोज दैट। कैन आई हैव अ थम्स अप? यू नो all the stocks are in YouTube, all the videos are in YouTube। can you please show them the YouTube channel? They can all subscribe। can you please show the YouTube channel please? Yes, sir. Yes, sir. YouTube channel please।
So we go to YouTube and put value stocks. Can you click videos please? Can you click videos? Subscribe कर लीजिए. एंड अगर वीडियोस में क्लिक करेंगे तो मेरे सब वीडियोस आ जाएंगे. जैसे अभी वाला वीडियो है वो रात को आप प्लीज क्लोज दिस, प्लीज क्लोज दिस, बी ऑन द फ्रंट पेज ओनली. यस, ये मेरे सब वीडियोस दिख जाएंगे आपको. ये कौन सा वीडियोस है, हम लोग अपडेट करते रहते हैं. एक मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक सेशन आपके लिए नहीं लिया था, मैंने ग्रुप में लिया था, रिड्यूस रिस्क. इस वीडियो को जरूर देखिएगा. इस वीडियो में, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिपीट हियर, ये वीडियो में आपको समझ में आया कौन सा स्टॉक में सबसे ज्यादा रिस्क होता है. ओके और मैं डेटा दिखाना चाह रहा हूं. कैन यू शो दैट 1 ईयर डेटा? ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको इसका हिंट 1 मिनट में दे रहा हूं, बट आप वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब स्टॉक लेते हैं हाउ डू यू रिड्यूस रिस्क. तो अभी मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन है, मार्केट इज डाउन बाय 9%, माय पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 5%. अभी मैं चेक किया, वी आर बीटिंग निफ्टी बाय 4% राइट नाउ. नाउ वी हैव ओनली वन स्ट्रेटजी and that strategy has outperformed Nifty by 4% abhi. What are you opening? Yeah, can you open that yearly standard deviation? देखिए Yes. yearly standard deviation mark करना please. So out of 750 मैंने yearly standard deviation लिया है top 100 stocks जो सबसे high risk है. ओके वीडियो में दिखाएंगे ये डेटा. उसका रिटर्न देखिए, 52 हाई से कितना गिरा है वो 100 स्टॉक्स. This is exactly in the full video. The 100 stocks has fallen by 37%. ओके अब मैं लोएस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन से आ जाता हूं. फिफ्टी टू हाई से ये कितना गिरा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं. दिस इज फॉलन ओनली 21%. A 17%, 16% डिफरेंस इन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच स्टॉक. ये डेटा ये मिलता नहीं है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. यू एंड पीपल हैव नो नॉलेज कि हमें स्टॉक का स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखना चाहिए व्हेन यू बाय अ स्टॉक. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग. दैट वीडियो इज अवेलेबल, प्लीज देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा वीडियो देख के. एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको एक तो मैसेज आ जाएगा. So we are uploading all these videos in YouTube regularly so that you can study what we are teaching everybody. Okay, let's continue in the PPT. Please see that video, reduce risk. So what is the good strategy is, if you want good returns, buy high growth stocks. But agar market girega, buy those stocks high growth but less beta and standard deviation. Very, very important. Okay, next slide. So defense has done very well. Another thing which, I want to show you defense stocks. Defense stocks dikhana beta. Solar Industries is plus in this market. We were checking, it's a great stock. Very, very good stock. Acha correction mein bhi mil raha hai. So Solar Industries, MTAR Tech, I think so. It's another a very, very good stock to buy. Data Pattern is a good stock. So agar koi bhi stock hame acha correction mil raha hai, we have 2-3 stock which we are only bullish on 3 stocks here: Solar, Data Pattern and MTAR. Because of the entire research we have done, हम लोग का 3 favorite है: MTAR, Solar and Data Pattern. Out of all the stocks which we are telling you. Okay, so in this market में भी stocks plus होते हैं. मैं यही बताना चाह रहा हूँ. If you're in the right sector, in stocks plus होते हैं, despite of a 2000 point fall. So there are stock which has even fallen very less in this period. Okay, so this is another very, very important information which I wanted to give. Now we are adding one more thing. Let's go to the PPT. एक फ्रेंड नया हम लोग चालू कर रहे हैं अभी, ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूं. शायद मालूम नहीं, म्यूचुअल फंड कौन सा स्टॉक लेता है, उससे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं. तो उसका हम लोग ने रिसर्च कर लिया है पूरा. वी हैव डन द एंटायर रिसर्च नाउ एंड वी नो एग्जैक्टली मंथ ऑन मंथ वो क्या स्टॉक है. ऐसे ये क्वार्टरली अवेलेबल था, बट हम लोग ने इसको मंथली कर दिया है.
तो हम लोग इसका एक सेपरेट वेबिनार करेंगे या ज्वाइंट करेंगे, विल थिंक अबाउट इट. So we will be doing a webinar probably every 15th. I'm not promising you, but we might do, where we will cover कि म्यूचुअल फंड कौन सा स्टॉक्स खरीदे हैं in the last 1 month. Okay, that is from 1st February to 20th February. तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी 2000 म्यूचुअल फंड है उसका पूरा हर स्टॉक 5000 स्टॉक का डेटा बनाते हैं. Lot of effort has gone in making this data, and then we check that which are the good stocks which has growth and which has given returns between 1st February to 20th February. So I want to show you a stock list. Let me show you a stock list. Do you want a stock list, or I should not show you a stock list? Are you interested? Let me see. If they're not interested, we will not show. You are band kar do stock list. Are you interested to see the stock list? Yeah, many people are interested. Okay. People are interested. Okay. Sir, shall I show it? Yeah, please show them. They are interested to know the stock list which they are buying. So this is what they have bought. ओके, भेल उन्होंने 2400 करोड़ रुपया खरीदा है. प्लीज मार्क एक्स पॉइंट. सी प्लस इज आदित्य इंफोटेक 774 करोड़ रुपया खरीदा है. ओके, now it will be very interesting to know this data in March, what they will buy. Ather in the energy उन्होंने खरीदा है 471 करोड़ रुपीस का. Then Lenskart 425 crores, Apar 213 crores. Try to focus only stock above 50 crores actually. So Laurus Lab is in our strategy, by the way. Shadowfax is in our strategy. They already हम लोग NetWeb is in our strategy. अगर लोगों को मालूम है कि नहीं, these are all in our 25 stocks. So already bought है. Thengamel is in our strategy. Aquitas is in our strategy. So all these stocks they have bought actually from 1st February to 28th February. Huge buying has happened in these stocks. Okay, so we are just giving you the data. This is not a recommendation to buy and sell. We're just following that what they are buying. So obviously हम लोग ये data देख के हम लोग भी कुछ अपने strategies में buy करते हैं. So these are some of the stocks. Shadowfax is a very, very good stock. Okay, so these are the stocks they bought in February. There have been there are many stocks they have bought and sold, but these are the main stocks which we have researched and we thought it's good. It's a good number, and so we will share with you. Okay, let's continue. Okay, let's continue, please. So I want to show you our stocks and which sectors they are by. Can you show the sectors? We have our 25 sectors, please. Yes, sir. Only the sectors of our stocks, not the stock names. With stocks name, right? Our 25 stocks in small case. Yes, sir. Only the sectors. You can show from the fact sheet also. Better you show the fact sheet. Data center and everything. Yeah. Okay. So there, what we are interested in, we are अगर मेरा 25 stock की मैंने repeat कर रहा हूँ. So semiconductor is we are very bullish. So we have a stock from specialty chemicals in our portfolio. Diabetes is the biggest problem in the world. So we have a stock from diabetes. So recently 3-4 दिन पहले ही 20% ऊपर था. Quick commerce, everybody knows we have Zomato in our portfolio. Cables for data center. Then quick commerce delivery is Shadowfax. I'm using some names which are in
in our portfolio, आप देख ही सकते हैं, which is a quick commerce delivery and hardware for data center. And all these stocks we were observing, जो हम लोग लिए रखे हैं, we in February there were also mutual fund buying happening in these stocks. Okay, asset management company, we have ICICI AMC in our portfolio. We have one public sector bank. We have an investment company. We have a specialty retail. We have one jewelry company, one aerospace defense. So it's a very nice portfolio of 25 stocks from different sectors, which we have done. And I also want to show you that we are outperforming the index by 4%. Our strategy is down by about 4.5% from 25th of February. मोटा मोटी एक महीना हुआ है when the market has been down and Nifty was down by about 9%. So we are outperforming Nifty by 4%. So please remember, what is the strategy of a fund manager? We are not traders. We can't entry and exit. वो हम लोग कर नहीं सकते हैं. Only God can do it, or some people can try to do it. They do it. I can't do it. So what we do is our strategies, because of the standard deviation beta, we reduce the risk drastically in our stocks. So when the market falls, we fall less. And when the market rises, because we are buying high growth stocks, we get a very good alpha. So we are always invested in the market. So this is how you construct a portfolio. So portfolio construction is a very diversified portfolio where high growth and low risk. इसीलिए हम लोग का जो स्ट्रेटजी का नाम है हाई ग्रोथ लो रिस्क स्ट्रेटजी. If you study a name, blue chip high growth valuation strategy means we really care of the valuation and risk in the market. That's a very important thing जो normal लोग नहीं कर सकते हैं. That is why people invest with us. So I think so we have done very well, and market अगर 23,800 के ऊपर चला गया, so this strategy जो भी 4.5% down है, it will become plus. So हम लोग का आप देखिएगा, people who are invested in a strategy in small case, अभी आपका कितना डाउन है, लास्ट एक महीना का देखिएगा, एक महीना में दिखाता होगा कितना डाउन है 1 month में, एंड आफ्टर 1 month में हम लोग भी दिखा सकते हैं ना 1 month ब्लू चिप एक महीना में कितना डाउन है, दिखा दो ना एक बार. Yes, sir. Blue chip high growth strategy in small case, please. How much is down in 1 month? Yes, sir. Are you showing, Sujit? Yes, sir. It's open. वन मंथ परफॉर्मेंस, क्योंकि 1 month से मार्केट थोड़ा डाउन है, 20-25 दिन हो गया है. ओके, सो यू विल जब ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 28 तारीख से बाजार गिरा था, तो वहां से देखिएगा इसका परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा. इज इट करंट? व्हाट इज द डेट? करंट इज करंट तक है पूरा. Yes, sir. सो वी आर आउट ऑफ मार्केट इज डाउन बाय 10%, यहाँ पर 8% दिखा रहा है. So we have calculated the strategy from 23rd February, जो हम लोग ने नया लिस्ट दिया था, वो मेरे पास है, जिसमें 5% डाउन है, which is from 23rd क्लोजिंग से जो मैंने फाइल बना के रखा हुआ है. This is 3 days extra. Okay, so नया जो strategy हम लोग 23rd February से लॉन्च किया, I was able to see it is 5.6% down right now.
and Nifty is about down by about 9%. So we are definitely outperforming the market. This is what I wanted to see even in the Mandi market. तो 5-6% इतना बड़ा मार्केट में 5-6% लॉस करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है. और आप देखिएगा जैसे मार्केट टर्न होगा, वी विल कवर दिस इन 3-4 डेज. हम लोग 3-4 दिन में इसको कवर कर जाएंगे. Okay, this is a long term chart. Okay, so this is a very important thing which I wanted to show. Let's go back to the. Okay, so now if you don't want to, if you're feeling very fearful, wait for 23,900. But 23,900 में definitely कुछ रुपया मार्केट में डाल दीजिएगा. मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ. If the crude oil goes to $88-$85, market is above 23,900, definitely put some money in the market. ओके, बिकॉज अगर आपको अभी डर लग रहा है तो या अभी कुछ डाल दीजिए, वहां पे ज्यादा डाल दीजिएगा. दिस इज अनदर थिंग विच आई वांट टू, और यू वांट टू वेट फॉर द मार्केट टू स्टेबलाइज, सब कुछ क्लियर हो जाए, वॉर एकदम खत्म हो जाए, तो फिर आप डाल दीजिएगा. इसलिए मैंने आपको एक तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दे दी. ओके, वी ऑल्सो डू म्यूचुअल फंड्स. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस. मैंने एक फ्री रिव्यू हम लोग देते हैं, इसका लिंक भेज दो प्लीज. प्लीज अपने स्टॉक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन ईच स्टॉक का करवा लीजिए. दिस इज अ फ्री रिव्यू where we take the data from the government through the PAN card, and then we can give you the entire buy sell full thing in within 1 to 2 minutes. So please get the free review done of all your stocks अगर आपने नहीं करवाया है, and all your mutual funds also. इसका एक फ्री रिव्यू बहुत ही अच्छा चालू किया हम लोग ने, बहुत ही इजी स्टेप्स है करने के लिए, and you can do it yourself. Can you open the thing please? Yes, sir. Yes, sir. Open the portfolio. Yes, yes, sir. I'm opening it. बोलते हैं. You can do it yourself also. You don't need to. अगर आपको खुद को भी करना है, आप कर सकते हैं. Shall I open chat and unmute also, right? Yes. Okay. Can you show them the thing portfolio review? Open the chat and send everything in the chat. Yes, sir. Yes, sir. Sending. I hope this session is benefiting you. We'll finish in about 3-4 minutes. Can I get a thumbs up? Is it benefiting you? Yes, no? So we opened the chat also now. Yes, sir. Chat is open. Okay, so now can you please put the link? You can do a free review. Yes, अपना sir. स्टॉक्स, अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू करा लीजिए. चेक कर लीजिए वेदर द स्टॉक इज वेरी रिस्की. आप देखोगे जो आपके स्टॉक बहुत रिस्की है वो ज्यादा गिरे हैं लास्ट 52 वीक हाई से. सो आपको ये तो ये नॉलेज से आपको थोड़ा आप कंट्रोल कर पाएंगे, मुझे हाई रिस्क स्टॉक्स नहीं लेना है अपने पोर्टफोलियो में. ओके, सो this is what we can help you. If you want anybody to review, you can put your phone number. My people can call you and do a free review for you. This recording will be available in YouTube. You can go to YouTube and watch tomorrow. आपको कल YouTube में मिल जाएगा पूरा. All my videos now will be put in YouTube free. You can watch anytime. Okay, if you want a free review, please put your name. If you want your mutual fund review, because बहुत लोग गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखते हैं. If you want a mutual fund review, also we can do it for you. Okay, so you can get a free review. You can put your phone numbers. I open for questions. You can put in your chat if you have any questions. Friend, the session is over. अगर आपको कोई question answer नहीं करना है, you can leave. If you want to have any questions, we are happy to buy. छोटा सा क्वेरी है सर. बोलिए. मैं हाँ सर अभी तो निफ्टी पी सर बहुत कम हो गया सर, आपका 20 में आ गया है, तो अभी मतलब कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, मतलब मार्केट जब उठेगा? मैंने आपको स्मॉल बताया कैपिटल हाँ गुड्स सबसे अच्छा करेगा. कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, सोलर, ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मर सबसे अच्छा करेगा. अच्छा. थैंक यू सर. HDFC बैंक, नॉट अ वेरी, आप जानते हैं सर, एनीथिंग विच डज नॉट ग्रो एट 20% मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है.
Hindustan Copper is still holding. We are holding in our portfolio. Yes. पोर्टफोलियो रिव्यू लिंक भी दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप खुद भी कर सकते हैं, या फोन नंबर दे दीजिए, मेरा आदमी आपको फोन कर ले. The session is over. We are just taking questions. If you want to leave, you can leave. Please ask me questions about any markets, anything. We have 3 more minutes. सर गोल्ड का अभी क्या लग रहा है अपने को? 4500 के आसपास तो आया है. ले सकते हैं. 4500 is a good entry to buy. Entry to buy. $71 and 44.50, 45 is a good entry to buy gold. ओके ले सर. सकते हैं. Small case investment minimum is 5 lakhs, and there's only one strategy right now. One is a mutual fund strategy, one is a equity strategy. So you can invest in that strategy. Any other questions? सब लोग उदास हो रखे हैं, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. Yes, please. What's your view on HAL? HCL, I'm not very bullish. I would rather prefer Solar Industries and Bell. If you want to buy Bell rather than HCL. BEL. Thank you. Thank you. I'm more interested in Bell and Solar Industries, MTA Tech, Data Pattern. I'm more bullish on these 4 stocks in defense. सर बैंक निफ्टी में आपका क्या व्यू है? बैंक बाजार ठीक होगा, बैंक निफ्टी भी तेज हो जाएगा वापस से. बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन कंसर्न, डर लगने के कारण गिरा है, बट मार्केट वापस तेज हो जाएगा बैंक निफ्टी. काफी मतलब 10% से आसपास गिर गया ये. सभी मार्केट 10% डाउन है सर. Repeat the stocks bullish. I said na, I said MTA Tech, Solar Industries. Please, it is not a recommendation, by the way. So these are my anybody wants to ask any questions? So what is your view on the small cap mutual funds? Small cap mutual मेरा strategy का बोल रहा है? No, I'm asking generally. I'm investing in small cap, mid cap, and large cap allocation. No, but you have to be So, careful. There are very few who are good. There are about 40 small cap mutual funds. आपका किसमें investment है? it's in quant. No, quant is very dangerous. High risk strategy है. बाजार गिरेगा, बहुत ज़्यादा गिरता है. We have some very good small cap mutual funds you can invest in. आप अपना portfolio review करवा लीजिए, and then my person can help you to invest in better small cap mutual funds. Okay. Sir, can you hear me? Yes, please. हाँ Sir, Nirij, I can hear you. the MTR defense stock, sir, I think you had suggested, but the valuation is quite high. Sir, P multiple is very high. But the future multiple is very low. I'll show you. Good question. Can you please open MTA Tech? Click, I mean, I would like to understand. Sir. Yes, I'll explain you. Open MTA Tech, please. Yes, sir. Yeah, that's very good. Bandhan Bank small cap is very, very good. जो भी म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन पूछा था, स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद अस, वी कैन रियली गाइड यू प्रॉपर्ली इन म्यूचुअल फंड्स. सो अगर आप देखेंगे सर, इसमें इसका 34 करोड़ का प्रॉफिट आया है करंट क्वार्टर में. Okay. तो 34 into 4 कितना होगा? Almost 140, 150 crore. 150 crores. 150 crore divided by, and if you divide by 10,000 divided by 150, then how much is the P? 1 minute, sir. I think I need to check, 10,000 divided by 150 कर देना फटाफट. How much is the P? 10,000 divided by 150, 140. मैं कर दिया आपके लिए, ठीक है. 140. So P is only 71 right now. Yeah, but sir, it is almost high than the last 5 years P. नहीं, अभी इसमें जो ग्रोथ आ रहा है ना, इसमें जो अभी नया ग्रोथ आ रहा है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसका फ्यूचर भी बहुत ही फेवरेबल है. Okay. So अभी इस बार में, but we are expecting the profit to be in 2027
We are Yeah. expecting the profit to be 200 crores. Okay. On that basis, the P is only 50. So this is called understanding the growth and the P ratio of future. आप करंट पे कभी नहीं लेते, आप हरदम लेते हैं कि इसका फ्यूचर पी क्या होगा. Okay. इसका फ्यूचर पी आज मुझे 50 से मिल रहा है, मेरे लिए बहुत सस्ता है. So because of this, sir, it's a high growth company. You give benefit of high multiple. Yes, correct. Okay. अगर आप देखिए इसका, अगर आप देखिए लास्ट 2025 में 52 करोड़ रुपया सिर्फ कमाया था, प्लीज मार्क, पूरे साल में. Yeah. और अभी सिर्फ एक क्वार्टर में 34 करोड़ रुपया कमाया है. Okay. मतलब इसका प्रॉफिट 50 करोड़ से 150 करोड़ रुपया हो जाए. Yes. तो ये भी हमें सीखना चाहिए कि दिस इज हाउ यू गेस द कंपनी विच इज ग्रोइंग. But at the same time, you have to see the risk also. The risk in the share is definitely increasing because वो 2500 का 3800 हो गया. Right. तो इसको करेक्शन में ले सकते हैं. I can tell you where to buy जैसे MTAR. आपने Can you सर please जल्दी open से the chart 2500 of का MTAR, बताया, please? करेक्शन हो ही नहीं रहा है ये स्टॉक में. हुआ है ऊपर से 10%. मैं आपको दिखाता हूं, अभी 10% करेक्शन हुआ है. वेरी गुड क्वेश्चन. आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. जो हम लोग स्टॉक बात करते हैं उसमें मैं डिस्कस करता हूँ. तो अगर आप देखिए ऊपर में बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है, ये ऊपर से 3918 का नीचे आया था. So I think so if you a good rate to buy will be definitely come down. Can you ये वाला, हाँ, ये वाला लेवल जो है ना 3140 is a good rate actually. Okay. अगर यहाँ खरीदेंगे तो अपना रिस्क कम हो जाएगा काफी. Okay. Okay. Right. So, sir, the main the point is that high growth company we generally give benefit of high multiple. But the high multiple, but the future growth has to be, the peg has to be below 1. Okay. Okay. So you please study in Google what is peg. PEG, peg ratio. Okay. Okay. Okay, peg is P and growth. Okay. अब मैं अपने वेबसाइट में दिखाता हूँ. Can you show the peg So how please? much should be the peg ratio, sir? अगर आप देखिए peg ratio यहाँ पर 1.5, anything below 2 is good. Okay. 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 But if this goes below above 2, then it is not a good buy. There's also generally I see price to book. Also, I think generally if Price it's to more book than is 2. good for banks. Price to book is good for banks, not for defense companies. Okay. Price to book is very good for banks. When you see the bank, then you should see price to book. NBFC bank, financial companies में price to book देखा जाता है. Sir, but in today's time, if you see the HDFC Bank, it is the very strong fundamental, and it is we are getting at 16 multiple, which is very, 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 very attractive price. I think so. For a 16 multiple for a bank is pretty high. Okay. If you see, I can show you multiples of Canara Bank. Can you please open the P multiple of bank, State Bank? The private HDFC bank, sir, it looks good, attractive, sir. But if you see the growth, I'll show you. Yes, sir. Yes, sir. Let me Can open. you please open HDFC Bank? No, please, and then the website only, please. Website, please. सिक्सटीन का मल्टीपल है, ग्रोथ क्या है 2%. ग्रोथ देखिए 2%, 12%. Yeah. ठीक है, इसीलिए ये एक साल में भी 10% नीचे है. एक साल में इसका ग्रोथ कितना है, 10% नीचे है. एंड 16 का पी है. But sir, profit the growing at almost around 12%. Well, but the sale is only 2%. Yeah, that's true. That's true. Okay, I'll show you Maharashtra Bank. I'll show you Maharashtra Bank. Bank of Maharashtra. The P is 7. It is growing 16% and 27%, Okay. which is better. And it is grown now. 1 year return is 32%. Sir, HDFC Bank आप लोग नाम लेके पकड़ लेते हैं. Actually क्या होता है, we are not aware HDFC Bank because it's a big name. Yes. महाराष्ट्र बैंक भी छोटा है क्या सर? 50,000 करोड़ की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है. But उसका P7. sir, many PSU bank you are getting below 10 PA right now, but because of the government bank, people are afraid,
Why? Why are you afraid of government bank? PSU has little bit low weightage, you know, sir. नो, इट इज हिस्ट्री. अगर आप देखिए 2023 में इसका सेल 15,000 करोड़ था, Okay. अभी 25,000 करोड़ है. और कंपनी का प्रॉफिट देखिए, आप देखिए 2,000 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है. Yeah. आप जो बात कर रहे हैं ना, ये आप कांग्रेस एरा का बात कर रहे हैं. 10 साल में ऑल बैंक्स हैव चेंज्ड. Right. प्लीज शो हिम द पीएसयू बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी. सर वो चेंज हो गया है. Okay. So, but sir, the many PSU banks are available at good price, sir. Yes, it's available and they're growing. Yeah. PSU banks are definitely better than the private banks. It is growing, it is giving you returns. ये आपको साल में 32% का रिटर्न दिया है. HDFC Bank is given a negative return. आप देखिए all PSU banks, see the profit. They are 54,000 crores. Profit हो गया है PSU banks में. Yes. So I think the central bank, UCO bank, they have Indian Overseas Bank, they have very good price, very Yes, they attractive are price. priced and they're growing. But अब हम लोग ने, that is why I'm saying you have to see the growth also. Okay. If you only see P multiple, Yeah. that is not correct. You have to see the growth. Okay. ग्रोथ देखिए ना हर शेयर का. मेरे वेबसाइट में आपको सब शेयर का ग्रोथ भी दिख जाएगा. You mean the growth in the sales and the profitability, all the growth यस, everywhere. ग्रोथ इन सेल. आप क्या है सर, बिजनेस में क्या करते हैं सर? Yes. बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग का? रेवेन्यू कैसे बढ़े, प्रॉफिट Yes. कैसे बढ़े, इसीलिए हम ऑफिस जाते हैं. Yes. आज अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है. Yes. सो ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट वो क्या होता है, कभी कभी बड़ा नाम होता है ना, तो हम लोग यूजुअली वी हैव अ साइकोलॉजी की बड़ा नाम है एचडीएफसी, ऐसे वो बेटर है. Yes. बट दैट इज नॉट द करेक्ट वन. Okay. Okay, thank you very much. Anybody else has a question? हेलो Yes, please. सर, आपने बिटकॉइन के लिए बात किया था और उसके सामने अपन हिंदुस्तान कॉपर भी होल्ड किया, वही बहुत टूटा हुआ है, एज वेल एज गोल्ड एंड सिल्वर. सो आप उस पर थोड़ा व्यू कर सकते हैं आपका? गोल्ड सिल्वर अभी मेरे इस भाव में ले, मेरे हिसाब से सिल्वर मैंने आज ही दिलाया है किसी को. सिल्वर अपने ले सकते हैं इस भाव में. थैंक यू. एंड हाउ अबाउट बिटकॉइन एंड हिंदुस्तान कॉपर? बिटकॉइन नहीं ले सकते. बिटकॉइन के बदले आप वो क्या नाम, एक माइक्रो स्टॉक स्ट्रेटेजी आपने बोला था, माइक्रो वो ले स्ट्रेटेजी. सकते हैं, या आईबिट का ईटीएफ ले सकते हैं. गॉट इट सर, गॉट इट. आईबिट ईटीएफ, IBIT. थैंक यू. But sir, they're telling the market analysis says if the oil still crashes down, then the gold and silver will go further crashing. Why will it go? If the war Gold prices continues, does then not the mean crude oil oil. price goes up, Gold prices works with dollar index. डॉलर Yes. इंडेक्स का चार्ट लगाओ. गोल्ड प्राइसेस डॉलर इंडेक्स से चलता है. Yes. एंड इंटरेस्ट रेट यूएस से चलता है. प्लीज रिमेंबर दिस. इंटरेस्ट रेट लो है, दैट इज वेरी बुलिश फॉर गोल्ड. जब तक इंटरेस्ट रेट गिरता रहेगा, गोल्ड बढ़ता Yes. रहे. यूएस इंटरेस्ट रेट, Okay. ओके, एंड डॉलर इंडेक्स, इससे गोल्ड चलती है. ये आप ये चैट जीपीटी में भी करेंगे तो आपको वही आंसर देगा. क्रूड But ऑयल से नहीं today- चलती है. But sir, today's time they say आप that देखिए गोल्ड क्यों बढ़ रहेगा आप, क्योंकि आप देखिए ये ऊपर में लास्ट अगर आप देखेंगे मंथ में yes. जो 5-6 महीना से था, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे नवंबर से जब गोल्ड बढ़ रहा था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा था, इसलिए गोल्ड तेज हो रहा था. Yes. अभी नीचे देखिए ये डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, इसलिए गोल्ड थोड़ा गिरा है. लेकिन अगर ये फिर डॉलर इंडेक्स गिर जाएगा, ये फिर वापस 95 के आ जाएगा, गोल्ड फिर से तेज हो जाए. Okay. So please study dollar index and the interest rate is low. So Okay. interest rate low and dollar index going down, gold will go up. This is how it is correlated. So I think, sir, this is a short-term reaction, I think. It is just a short-term reaction. It's a very good opportunity to buy gold and silver. Yeah, I think that sounds that it's a good opportunity, sir. That It's we are very right. good opportunity. Yes. Good, yes. Please invest with us. Please get your portfolio checked. आपको बहुत benefit मिलेगा हम लोग से. Yes. If you have a large portfolio, I can also do one-to-one with you. So Yes. बहुत आपको benefit मिलेगा उसके लिए. Okay, Yes. anybody else has any questions? What about a view on PGEL, sir? Sorry, we cannot answer personal question में, तो फिर मैं वही करते रह जाऊंगा. मेरे स्टॉक्स जो मैं बात करता हूँ उसके बारे में पूछेंगे, मैं आंसर करूंगा.
सर आपका वो वेबसाइट पे निफ्टी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही बता रहा है, व्हाट इज द रीजन बताया फॉर तो दिस? मैंने शुरू में बताया था, आप सुने नहीं मिलब जी। प्लीज सी द शुरू का वीडियो, प्लीज सी द वीडियो ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट्स। आप लेट आए होंगे आज। प्लीज सी द रिकॉर्डिंग इन यूट्यूब, इट विल बी अपलोडेड टुमारो। फर्स्ट 10 मिनट देखिए, उसका आंसर मैंने दे दिया। सर मार्केट सर का पी अभी अप्रोक्स 20 है, तो ये सेफ जोन है क्या अभी? मतलब अपने और तो सब डिस्कस किए हैं पी के हिसाब से। सर मैंने फिर बताया, अभी पी से मार्केट नहीं चल रहा है, अभी क्रूड ऑयल से मार्केट चल रहा है। आपने फर्स्ट 10 मिनट देखा था मेरा वीडियो? हाँ देखा था। मैंने आपको बताया ना सर, अभी बाजार कैसे चलेगा मैं अभी बता सकता हूँ। अभी क्रूड ऑयल से बाजार चलेगा ओके ओके, और मैंने किसी से बाजार नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लीज अभी, नॉट नॉर्मली बट अभी, अभी जो सिचुएशन है, अभी वॉर हम्म। के टाइम पे इट्स ऑलवेज क्रूड ऑयल। यस यस यस। अभी क्रूड ऑयल के हिसाब से बाजार चलेगा। क्रूड ऑयल देखिए, उसके हिसाब से एवरीथिंग विल रन। क्रूड, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, क्रूड ऑयल अगर 91 के नीचे गया, रिस्क इज फिनिश्ड, शेयर बाजार में घुस जाइए। क्रूड ऑयल अगर 100 के ऊपर गया, शांत से चुपचाप बैठे रहिए। ठीक है, अभी अभी ये सिनेरियो में बता रहा हूं, दिस इज द करंट सिनेरियो जिसको शॉर्ट टर्म देखना है। सर आईटी सेक्टर में लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, दे ऑल आर डाउन बाय 30-40%, सर। अब कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एआई इज टर्निंग देम। द प्रॉब्लम इज एआई इज टेकिंग देयर वॉल्यूम्स एंड टर्नओवर एवरीथिंग, एंड दे आर अनएबल टू शिफ्ट टू एआई क्विकली। बट सर दे तो से दे जैसे था ना, हम लोग के अवेलेबल पहले याद है, हम लोग पिक्चर देखने जाते थे वो हॉल में, फिर यस आइनॉक्स आया यस तो हम लोग वो पुराने हॉल में जाना बंद कर दिए। तो अभी यस। टीसीएस, इन्फोसिस और पुराने वाले हो गए, एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टू एआई। सो इफ दे डू नॉट चेंज, वो सब कचड़ा हो जाएंगे। आपको मालूम पड़ेगा, दिस विल ऑल बिकम मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स विद But इन sir, 2-3 years। they are in the process of getting into AI, so they need some अब जब time. So, आएगा but they देखेंगे, लेट द लिटिल शो इन द सेल्स ग्रोथ। okay, okay, सर इट इज, सर आपको समझना पड़ेगा कि अब एक टाइम चेंज हो गया है। फिर मैं बता yes, रहा हूँ, जैसे ब्लैकबेरी था, yes, उसके बाद आईफोन आया, yes, तो पूरा खत्म ही हो गया सर वो। yes, true, true, कोटेक पहले था कैमरा, फिर जब वो आया डिजिटल आया तो पूरा खत्म हो गया। तो yes, अभी क्या है, इट इज अ फुल चेंज, देयर इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड व्हिच इज एआई। yes. इफ दे डोंट शिफ्ट टू एआई, you will see that they will become mid cap and small cap stocks in 5 years. Because they are the brand and they're the good, like good people are behind these companies. नरेश भाई, मैं समझ गया, यू आर अ कंप्लीट लार्ज प्लेयर एंड यू ओनली इन्वेस्ट इन गुड नेम्स। मैं आपको बेटर बताता हूँ आपको तरीका। सेल ऑल दो स्टॉक्स एंड निफ्टी का म्यूचुअल फंड ले लीजिए। Okay, तो उससे क्या होगा, आपको टेंशन खत्म हो जाएगा। निफ्टी का म्यूचुअल फंड उतना ही रिटर्न देगा जितना इन्फोसिस, टीसीएस और आपको एचडीएफसी बैंक से बेटर ही रिटर्न देगा। okay, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन निफ्टी म्यूचुअल फंड yeah, rather than investing in Infosys, HDFC Bank, because they are old stories now. okay, okay. वो हाथी हैं, लेकिन अब वो हाथी चल नहीं पा रहा है सर। वो हाथी थोड़ा, हाथी धीरे धीरे ही चलेगा सर। Yes, yes. तो आपको वो लोग मोटा मोटी, अगर आपको एफडी का रिटर्न मिल जाए वो भी अच्छा है, पर अभी तो एफडी का रिटर्न भी नहीं दे रहा है लोग। Yeah, that's true. They're very badly तो hit. हाँ, सो इससे बेटर है शिफ्ट टू न्यू लार्ज कैप। व्हाट आर द न्यू लार्ज कैप्स? Yeah, Mahindra is the new large cap. You see the new car, you yeah, know, they are launching. So you have to yes. go to new large cap. If you're a large cap player, you can invest in a blue chip strategy. हम लोग के 12-13 large caps है strategy. Okay, okay. Zomato is a new large cap. It's a futuristic large cap. इन लोग बढ़ेंगे और ये सब स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे। Sir, now talking about Zomato, sir, it is a very high valuation, sir. सर Very आपका उसमें प्रॉफिट नहीं है तो वैल्यूएशन क्यों देख रहे हैं? आप उसका प्राइस टू सेल्स देखिए। okay. उसका अगर प्राइस टू सेल्स देखेंगे, सी द ग्रोथ इन सेल्स। कैन यू ओपन द चार्ट? Because I was wondering, sir, such a big high valuation, the price हाई is वैल्यूएशन आप सिर्फ going up. प्रॉफिट से देख रहे हैं ना, आप सेल से देखिए। मैं दिखाता हूं आपको ना, देखिए इसका पीएस रेशियो सिर्फ 5 है। Okay. सेल्स है नहीं ना, इसलिए आपको वैल्यूएशन दिख रहा है 9 से। प्रॉफिट है नहीं, सेल्स देखिए ना सर, 20,000 करोड़ का सेल था पूरे साल में। Yeah, sale is exponentially, it's going very high. तो सर पूरा मार्केट ले रहा है ये। दिस इज द फ्यूचर। Yeah, yeah, true, true, true. आपको ये देखिए, एक क्वार्टर में 16,000 करोड़, मतलब पूरे साल में 20,000 करोड़।
आप पूरे साल में इसका प्रॉफिट आएगा, सेल आएगा 64,000 करोड़। Bumper growth, सर ये सब स्टॉक्स एक अलग लेवल में है। Okay, okay, आप लोग क्या प्रॉफिट देखेंगे गलत हो जाएंगे, सेल भी तो देखना पड़ेगा। okay. Yeah, Top revenue line is very देखिए, attractive, but profitability is, आएगा ना, जिस दिन प्रॉफिट आएगा थोड़ी रुकेगा, तो जिस दिन ये प्रॉफिट आ जाएगा ये 1,000 रुपया हो जाएगा। yeah, it's very true, very true. जिस दिन ये प्रॉफिट आएगा ये शेयर रुकेगा ही नहीं। कौन सी कंपनी है ये जी? जोमैटो, Zomato. जोमैटो इटर्नल। So, sir, I think your logic is trying to understand that the growth and the revenue is very important, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर कोई कंपनी सेल ही नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट क्या करेगा वो? I उसका think it is प्रॉफिट due आने to का quick चांस बहुत commerce, हाई right? है। Yeah, that's true. जिस दिन इसका बड़ा प्रॉफिट आएगा ना, किसी क्वार्टर में 1,000 करोड़, किसी क्वार्टर में, Yeah. उसमें बाइंग फ्रीज ही चलेगा ये 15-20 दिन, ये सीधा 200 का 500 रुपया हो जाएगा। I think, sir, सेल Swiggy देखिए। is also following this the Zomato. सॉरी, Swiggy, the another quick सेम ही है, commerce हाँ company. सेम ही है, जेप्टो, स्विगी। Yeah, सर पूरे साल में 20,000 करोड़ का सेल, एक क्वार्टर में 16,000 करोड़ का सेल। yeah, that is very bumper sales. Very true. सर अपने को वो चाहिए जो फ्यूचर लार्ज कैप्स बन सकते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक, टीसीएस 2000 के लार्ज कैप्स थे। Yes. फ्यूचर लार्ज कैप्स कौन बनेंगे उसमें दिमाग लगाइए। Yes. आप लोग पुराने बड़े नाम में रहेंगे उसमें नहीं होगा सर, अब उनका टाइम खत्म हो गया। अभी Very टाइम है महिंद्रा महिंद्रा, इटर्नल, नए लार्ज कैप्स का टाइम है। Sir, in a renewable energy, they say because of the oil crisis, right now one should focus on renewable energy यस, stocks. वेरी गुड। वारी बहुत अच्छा स्टॉक है, अभी भाड़े भी है, लास्ट 15 दिन में पॉजिटिव रिटर्न है वारी का। Yeah, Wari is very good. वारी इज वेरी गुड, वेरी गुड लार्ज कैप, दैट्स आल्सो फ्यूचर स्टॉक। Because they say future is renewable, sir. इट इज रिन्यूएबल्स। मैंने दिया ना, आपने मेरा बुक नहीं पढ़ा है क्या नरेश भाई? विजन का सर नहीं पढ़ा है सर। विजन का बुक दो ना, बुक का लिंक भेजो ना इनको, बुक का लिंक भेजो ना प्लीज सुजीत, बुक का लिंक। तो सर Yes, sir. रिन्यूअल पे यू आर बुलिश तो सर किसमें? इन रिन्यूएबल वेरी वेरी बुलिश, वेरी वेरी बुलिश। या दैट्स द फ्यूचर सर। दैट्स द फ्यूचर। एआई इज द फ्यूचर, सेमीकंडक्टर, एआई, इसमें ग्रीन एनर्जी, ये सब फ्यूचर है सर। टीसीएस और एचडीएफसी बैंक फ्यूचर नहीं है। आई थिंक बहुत सर इट्स अ वेरी गुड लेसन टुडे। Yeah, that is how it is. That is the reality. You have to see future, sir. You do not see the past. मैंने बुक का लिंक Generally, भेज दिया sir, है। they are telling that HDFC Bank gives you return of around 12-15% yearly. देता कहाँ है सर? आप 5 साल में रिटर्न ही नहीं है। ये अभी तो दिया नहीं है, लास्ट 3 साल में नहीं दिया है। फिर क्या फायदा सर? कितना दिन रखेंगे? यस सर। उससे बेटर अपना थोड़ा पीएसयू बैंक ले लीजिए सर। बेस्ट है निफ्टी का म्यूचुअल फंड ले लीजिए, आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। लार्ज कैप्स लगाना है, मेरे पास कोई आता है ना, मुझे रिलायंस लेना है, एचडीएफसी लेना है, नेस्ले लेना है, आईसीआईसीआई लेना है, टीसीएस लेना है, मैं बोलता हूँ सब छोड़िए, आप निफ्टी का म्यूचुअल फंड ही ले लीजिए। यस राइट सर। धीरे धीरे सर, अभी ये तो अभी लोग सर थिंकिंग वी नीड टू चेंज द थिंकिंग यू नो। वो नहीं चेंज करेंगे तो यू विल बी स्टक एवर सर। आप मेरे से कुछ इन्वेस्ट किए नरेश भाई? हैव यू इन्वेस्टेड इन माय स्ट्रेटजी एनीथिंग? No, I am already talking to one of your madam and I think I'm in the process. प्लीज इन्वेस्ट, आपको अच्छा लगेगा। Yeah, I'm talking to Madam Anjali, you know. अंजलि, हाँ प्लीज So उनसे I had रहिए one or टच में। two meetings, so I'm in the process, you know. प्लीज डू इट प्लीज। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. गुड नाइट एवरीवन।